morning, students. Yesterday we studied about lesson number 2, major tribe of the world. Now first we start Eskimos. Eskimos tribe. Eskimo tribe living in the unfavorable conditions in total cold region and polar region, where the temperature is below the 0 degree Celsius. Total is the Frisian region. Eskimo tribes resides in the total Frisian region, cold and polar region. These tribes also related to Mongoloid race. First, here the 1 mark question. Eskimos related to Mongoloid race. Eskimo किससे related है? Mongoloid race. Okay. Next, what is the meaning of the word of the Eskimo? What is the meaning of the word of Eskimo? The people who eat raw meat. Clear? The people who eat raw meat. Clear? It's mean कच्चा मांस खाने वाला ना. तो raw meat eat करता है किस? Here the Eskimo. The word mean. The word Eskimo mean the people who eat raw meat, and Eskimos living in resides in the polar and cold region where temperature below the 0 degree Celsius. Clear? The main regions of the Eskimos region called in one word tundra region. Tundra region. Eskimo reside in tundra region. So where is tundra region? Tundra region. There is the North Canada, Greenland, Scandinavia, North Siberia. North Canada, Greenland, Scandinavia, North Siberia. Here, that the part of the North America, the north part of the North America, yeah, North Canada, and also Alaska is also the Alaska. The USA part, Alaska is the state of the United States of America. In Alaska also found here Eskimos. Clear? Alaska, North Canada, Greenland. Clear? Here called the Eskimo. And Scandinavia, the northern part of the European countries like here the Norway, Sweden, Finland. Here Eskimos called Lapps. Eskimos को यहाँ पे क्या बोलते हैं? Lapps बोलते हैं. Okay? In North Siberia, Siberia is the part of the Russia in Asia continent. Russia country in 2 continents, Europe and Asia. The Russian part of Asian part of the Russia is called the Siberia. In North Siberia's part, also reside here the Eskimo, and Eskimo is known as the name Tung Chakchi Samoyeds Yakut. यानी Eskimos को यहाँ पे क्या बोलते हैं? Tung Chakchi Samoyeds Yakut. Clear? Repeat here. The residents, the main regions of the Eskimo is tundra region, where the temperature below the 0 degree Celsius. The northern part of the North America, North Europe and the North Asia. Okay? Here Canada and Greenland called the Eskimo. In Alaska also called the Eskimo. Alaska, North Canada and Greenland. Next are the Scandinavia, the North European countries. Here they called the Eskimo is called here Lapps. In North Siberia, Eskimo is called Tung Chakchi Samoyeds and Yakut. Clear? In tundra region found here the polar bear, lemming, musk, deer, reindeer, caribou, dog. So main animals found here. So animals name polar bear, lemming, musk deer, reindeer and dogs. So famous here in this region, tundra region, famous animal reindeer. Reindeer is the famous animal of this region. Clear? And vegetations, energy, lichen, different kind of flowers also found in tundra region. Here only 30 to 40 days. The spring season, in this spring season temperature here the down, and here main vegetations, energy, lichen and different color of the flowers found in this region. And Eskimos are depend on fishes for the feeding. ठीक है? The fishes, main fish, seal, whale and walrus. Maximum use of the seal fish in this tundra region. Next here the hunting method of the Eskimos.
hunting method of the Eskimos. Main economic activities of the Eskimos is hunting. वो अपने फीडिंग के लिए, ठीक है, और भी इनकी जो एक्टिविटीज है उसके लिए जो मेनली डिपेंड होते हैं, किस पे डिपेंड है, इन डिपेंड ऑन हंटिंग, ठीक है. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द एस्किमोज इज हंटिंग फॉर देयर लिवलीहुड. Hunting method. The hunting method of the Eskimos is also classified into two parts: winter season hunting and spring season hunting. Winter season hunting and the spring season hunting. Winter season hunting also classified in two parts: Maupak and Uturpak, and spring season hunting is called the Utok. Clear? First here the winter hunting. Winter hunting two types here, the Maupak and the Uturpak, and spring hunting is also called here the Utok. Now is Eskimos related to the Mongoloid race. The hunting method of the Eskimos. Hunting method of the Eskimos. First year Maupak. तो what in the Maupak? Maupak में क्या होता है देखना. Maupak clear. Here the region, in this region, in this tundra region total here the फ्रीजन रीजन टेम्परेचर here the 0 डिग्री सेल्सियस. एस्किमो क्या करेंगे यहाँ पे ना, एस्किमो here air road. In this season, in this type of the hunting method, the word is Maupak, or Maupak mean to wait. Maupak word mean to wait. Wait का मतलब इंतजार करना. अब वो इंतजार किसका कर रहे हैं, वेट किसका कर रहे हैं, इसकी हम बात करेंगे. Eskimos get here spike of bone. एक छड़ लगा देते हैं. क्या करते हैं, छड़ लगा देते हैं. इससे क्या करें, then here the this spike of bone shake. shake जैसे ही क्या करती है, हिलती है, ठीक है. shake कब होगा, when here the passing here the fish below the frozen region या below the ice region. यहाँ पे ice है और ice के region के below यहाँ पे क्या हो रहा है, फिश पास हो रही है. जैसे फिश यहाँ से पास होने वाली है तो क्या होगा, ये जो बोन है, सेक ऑफ बोन, स्पाइक ऑफ बोन क्या करने वाली है, यहाँ पे हिलने वाली है, ठीक है. सेक द स्पाइक ऑफ बोन. देन इन दिस एट दिस मोमेंट एस्किमोस हंट द फिश विद द हेल्प ऑफ द हार्पून. द मेन weapon फॉर द हंटिंग ऑफ सील फिश हार्पून. हार्पून से क्या करते हैं, हंट करते हैं सील फिश को. व्हेन हियर द सील फिश पासिंग हियर, देन हियर द सेक द स्पाइक ऑफ बोन. और स्पाइक ऑफ बोन जैसे यहाँ से सेक होती है तो व्हाट हैपन हियर, ये एस्किमो क्या करेगा, डायरेक्टली इसको हार्पून से हंट करता है. सेकंड हियर द इतुरपाक. द सेकंड मेथड इन विंटर सीजन. फर्स्ट माउपाक में क्या कर रहा है, टू वेट और वेट किसे कर रहा है, द सेकिंग ऑफ द स्पाइक ऑफ बोन. व्हेन हियर द सेक द स्पाइक ऑफ बोन, देन द एस्किमो हंट द सील विद हेल्प ऑफ द हार्पून. सेकंड मेथड हियर इतुरपाक. इन इतुरपाक एस्किमोस मेक हियर द टू होल्स. क्या बना है इसमें, टू होल्स फ्रॉम द वन होल, फ्रॉम द वन होल हियर द वन एस्किमो पुटिंग द फीड. यहाँ से क्या कर रहा है एस्किमो, putting feed here. Then here the another Eskimo putting feed here. The Eskimo क्या कर, another Eskimo is here nearby the second hole. Then fish come to feed. Fish come here to feed. क्या कर रहा है, putting here the feed यहाँ पे तो feed को eat करने के लिए यहाँ पे fish आ रही है, ठीक है. Then here the fish come, ठीक है. Then here the Eskimo क्या कर रहा है, इंडिकेट द अनदर एस्किमो. अनदर एस्किमो जो यहाँ पे उसको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है. और इंडिकेट करने से क्या पता चल रहा है, हियर द फिश कम. देन हियर अनदर एस्किमो हंट सील विद द हेल्प ऑफ हार्पून. ठीक है, हंट सील fish with the help of harpoon. This method is called the Eturpak. And third, Utok. Third method here the Utok. Utok in spring season. Spring season method name is Utok. Spring season method name is Utok. In this method is simple here that when seal fish come out from the hole to breathe and the warm.
क्या करने के लिए, सन से वार्म लेने के लिए और ब्रेथ करने के लिए, जैसे कम आउट। फिश कहाँ पे हो रही है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आ रही है और जैसे ऊपर आ रही है तो सिंपल सा क्या होने वाला है, ठीक है। देन कहते हैं एस्किमोस हंट द seal fish. This method is the hunting method of the Eskimo. First, you have the Maupak, Itupak and Itok. Maupak and Itupak is method used in the winter season, ठीक है, and the Utok used in the spring season. Clear?